So yesterday we have already done some problems based on beta and gamma function. Now today again we are going to discuss some questions which are completely related to beta and gamma function. So questions will come in anyhow. You should remember three different formulas. That is, one is for the definition of beta and gamma function. It means relation. And see here, better I will write it. First one is our important beta function, that is beta m comma n value is equal to integral 0 to 1 x to the power of m minus 1. If you remember these formulas, any type of question, any type of problem, you can also just see the formula and you can do it. That gamma function is also important. Gamma function is integral 0 to infinity e power minus x power n minus 1 into dx. Then the relation between them, beta and gamma function relation, beta m comma n value is equal to, this is gamma m into gamma m divided by gamma m plus n. Gamma m plus n. This is first one is the beta function, gamma function, and the relation between them. So question will come related to any. It is not going to mention that you have to apply particularly this one, but only one thing is given here in the question. Evaluate like this. Evaluate. Look at the question is what? 0 to infinity x square e to the power of minus x to the power of 8 into dx. This is multiply by, देखिए क्वेश्चन में टिपिकल टाइप से दे रहा है, मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रल 0 to infinity x square into e power minus x to the power of 4 into dx. Sometimes it is given just to evaluate, sometimes it is given using the definition of beta and gamma function. Now my question is, our given problem is related to which property? Tell me, our problem is related to which property? Gamma Beta, function, sir. gamma function. So when I am solving this one, look at this, how I am going to solve. In this 40 minutes class, maximum 4 to 5 important questions we will solve it. What I am going to take, this part I am going to take as I1, means first integral. This part I am going to take as I2, which is second integral. Finally, after getting the answer, we can multiply both of them. Let us assume that I1 is equal to integral 0 to infinite x square and e to the power of minus x to the power of 8 into dx. Right. Now what I want to do, actually I want to convert in this problem into this format. It means e power minus x should be there. Okay, na? X power n minus 1 we will get dx. Then we can replace as gamma n. So for that one we required some substitution. What is the substitution? Put, देखिए फर्क क्या दिख रहा है आपको? E power minus x, e power minus x power 8, मतलब x power x power 8 को ही कुछ substitution करना पड़ेगा. Understood? Understood or not? Put x power 8 is equal to t. I want your answers. This implies, what is the value of x? The value of x should be t to the power of 8 will go that side, becomes 1 by 8. Is it correct? Yes, sir.
Yes. Now if you differentiate here, you will get dx is equals to t power n. Nx power n minus 1 formula we apply. N 1 by 8 into x power n minus 1. So you should be everyone whoever is there in our minus class 7 by right 8. now, please, you should listen the class along with your calculator. Otherwise, some of the steps what I am going to do it directly, you are unable to understand. Now x value we got it here. X value we got it here. We are going to find out x square value. X square value means if you squaring on both sides, what x square value you will get it? Tell me. X Squaring square on is both sides equals means to we t get power 1 by 8 whole square. 1 by 8 whole square is nothing but 1 by 4. 4. Correct. Now Yes, sir. all this information we have to use in our I1. I1 is equal to. Now one more thing is, if you see, the question is there, the limit 0 to infinity. We are going to convert the question into gamma function definition, where we have the limit again 0 to infinity. So it means there is no change, no need of changing the limit. अगर कोई student change करना भी चाह रहे हैं, suppose, look at, if you put lower limit x is equal to 0, you will get t is equal to 0. If you put x is equal to infinity, you will get t is equal to infinity. It means completely there is no change in limit. 0 to infinity, x square value is what we have to write? T power 1 by 4, T power 1 by 4. e power minus will be there, x power 8 value, what we have taken, that is T. t, and dx value we got it as what? 1 by 8 T power t power minus 7 by minus 8 7 by 8 into dt. dt. Okay. So what is the constant term Yes, here? sir. T. 1 by 8 is t is a constant term. No, sir. No, sir. 1 T is by the 8 main. 1 by 8 we outside. can take out. Sir. We don't say that t is the main. T is a function here. Yes, yes, sir. Now we can merge these two. Yes, sir. T power 1 1 by by 4 4 minus 7 by 8. Bases are equal. Power should be added. should be What will be the answer? Come on. 1 minute, sir. Answer is 1 minute. Yes. E power minus t we should write as it is. T power 1 by 4 and 7 by 8. 1 by 4 minus 7 by 8. Minus 5 by 8, sir. Exactly. T power minus 5 by 8 you will get into dt. dt. Now again we should arrange in this form. E power variable to chalega, कुछ भी x chalega, t भी chalega. Minus 5 by 8 we have to rearrange. I1 is equal to 1 by 8 integral, not here, sorry, it is not t, it is infinity actually. 0 to infinity. Yes, 0 to E infinity. power minus t. E power minus t. Now ये फॉर्म में लिखना है, तो एक काम करेंगे, t पावर माइनस नॉट माइनस प्लस 3 by 8 minus 1 कितना हो रहा? 3 by 8 minus 1 देखें. 3 by 8 minus 1 is equals to minus 5 by 8 हो रहा, sir. So minus 5 by 8 we can add it as 3 by 8 minus 1. 3 by 8 minus 1. Yes, sir. Yes. Now look at, compare this gamma n definition. 0 to infinity, 0 to infinity, e power minus x, e power minus t, x power n minus 1, t power n minus 1. N value is what? Tell me. By definition of gamma function, what is our n value now? Minus 3. 3 by 8, sir. Is it minus? No, sir. 3 by 8 only. I1 is equals to 1 by 8 is there already we have. Now by definition of gamma function, this can be written as gamma of 3 by 8. So one part Yes, of the integral is done. We have another part, right? Let us Yes, assume sir. that I2 is equal to, we have another integral in their problem. This question you may get it for 5 marks or 10 marks because there are two bits are there.
This is two parts are there in this problem. Minus x to the power of 4 into dx. If you see, there is a difference. Only the difference is x power 8 is there, x power 4 is there. 4 is Same there. process we have to adapt. Same Yes, sir. answer, not same, we'll get some different answer. Look at, I'm doing direct steps. Put, can you tell me what we have to put? X X power is 4 equals is to equal to t. x power 4 is equals to t. This implies x is equal to what? T to the power of T power 1 by 4. 1 by 4, which implies if you want x square value, then what? X square is equals to 1 by x 4 square whole is equals square to is 1 by nothing but t power 1 by 2, 1 by 2. correct? And if you Yes, sir. differentiate, dx is equal to Dx is equals to 1 n by 4 n into x power n minus 1. t power 1 by 4 minus 1 is 4 minus 3 by minus 1. 4 into dt. Now limits, there is no need of changing the limit. This problem I2 becomes integral 0 to infinity e to the x square value is t power 1 by 2 and e power minus as it is. Again x power 4 value is t here. And Minus what is dx? dx is 1 by 4 into 1 t by 4 power into, minus 3 by 4 dt. yes, 1 by 4 into what, t power minus 3 by 4 into dt. So what Yes. is the constant term we can take outside? 1 by 4. Take out 1 by 4, take out integral 0 to Integral 0 to infinity. infinity Again we can merge these to 1 by 2 minus 3 by t 4. power minus 1 by 4 e How power much? minus t dt. E power minus t, t power minus 1 by 4 Minus 1 by 4 dt. dt. माइनस 4 को फिर -1 फॉर्म में लिखना तो क्या होता आंसर? I2 is equals to, this is 1 by 4 Is as it equals to is, 1 by 4 0 0 to to infinity infinity as it is, e power minus t as it is. And e how power here we minus have to arrange? कैसे लिखेंगे? 3 by 4, 3 by 4 minus 3 by 1, how 4 much? minus 1. How much? 3 by Minus 4 1 by 4 minus now. 1. Yes, sir. I2 is equals to, so by definition of gamma function, what is the value of this? Gamma 3 by I2 4, is equals to 1 gamma 3 by 4, by correct? 4 gamma 3 by 4. Yes, sir. Now finally we shall multiply I1 plus I1 and I2. I2 plus, not plus, I1 and I2. Yes, sir. I1 multiply with I2, that is equal to I1 value is 1 by 8. अब आप 1 by बोलेंगे 8 सर इसको gamma. अपन गामा 3/8, गामा 3/8 को सिंप्लीफाई करने का एक लॉजिक है. अभी तो इसकी जरूरत नहीं है, वी हैव टू कीप एज इट इज. कहाँ पर इसकी सिंप्लीफिकेशन की जरूरत पड़ेंगे मैं आपको बताऊंगा. Into 1 by 1 by 4 4 gamma 3 by 3 4. by 4. So 8 4 the 32, we can multiply these two. 8 4 the 32 and gamma 3/8 Into gamma 3 by 8 into into gamma 3 gamma by 3 4. by 4 as it is, which is our final answer. Okay, sir. These questions what we have selected for today's class. This question is given in your examination paper, past papers. Okay. Oh, okay, sir. Now next, moving to the next. Again, there is some logical problem here. Okay, moving to the next page. Any doubt in this? No, sir. Now again, show that. Show that 0 to infinity
x to the power of 0 to 2n minus 1, x to the power of 2n minus 1, e infinity. power minus ax square, e power minus x square dx. And we have to show this answer is gamma n divided by 2 into a power n. You have to prove this result. 0 to infinity x power 2n minus 2 e power minus ax square dx. तो किससे रिलेटेड है? ये भी गामा है सर. Yes. So same thing. Let us assume that I is equal to I is equal to integral 0 integral to 0 to infinity. infinity x Okay, power x power 2 n minus 1 2n minus 1 e power minus 2 x power minus ax dx square into d. dx. Now look at gamma function definition is this one. ये e power minus x power n minus 1. e power Yes, minus sir. अपने क्वेश्चन में कैसा है? e power minus ax square. So what type of substitution we have to take? Put यहाँ पे Put लॉजिक है. Put t is equals to ax square is equal to t. माइनस तो is जरूरत equals है to ना t. आपको? माइनस की नहीं तो है sir. जरूरत है. माइनस की जरूरत है. माइनस यहाँ पे नहीं लेना. ओके, अच्छा. दिस Okay, sir. implies what is x square value? X square is equals to t by T a. by a. Yes, very good. Then what about x X is value? equals to X under is root t equal by to a. under root t by a, right? So t by a Yes, under sir. root I want to write like this. T power 1 by 2 by root a. Correct? By. Okay, sir. थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में लिख रहे हैं ना. क्यों लिख रहे हैं वो भी आपका रीजन अभी पता चलेगा. Now if you ठीक differentiate, है. what about dx becomes 1 by root a is a constant. Yes, sir. X dx is power n equals to formula n root of 1 by 2 into t power minus 1 by 2 n x power n minus 1, that is minus 1 by 2 into d. into dt. Now if you put these values और लिमिट्स में कोई भी चेंज नहीं है, राइट? Yes, sir. कुछ तो चेंज है क्या? बोली नहीं है ना. नहीं है. वी रिक्वायर्ड 0 टू इंफिनिटी. यहाँ पे भी 0 टू इंफिनिटी अगर आप करना भी चाह रहे तो रखे एक्स लोअर लिमिट 0, टी 0 होता, अपर लिमिट इंफिनिटी, टी इंफिनिटी. कुछ चेंज ही आता नहीं करे तो. Yes, इंटीग्रल sir. 0 टू इंफिनिटी. 0 to infinity. ओके, नाउ बी केयरफुल. एक्स वैल्यू, एक्स वैल्यू इज दिस वन ना. Yes, sir. कि पूरी की पूरी वैल्यू का पावर 2n माइनस 1 है. देखिए कैसा लिखना चाहिए. 1 बाई रूट ए, 1 बाई रूट ए 1 by root 2. टी पावर अच्छा, t 1 बाई power 2n minus 1. ऑल टू दी पावर ऑफ 2n Okay, माइनस sir. 1. इज इट करेक्ट? Yes, sir. t power minus this we have assumed as a t, so e power minus t, you will get dx value यहाँ पर है 1 by root a, 1 by root a into 1 by 2 into t power minus 1 by 2 into d. Right, बहुत सारे terms है. Be careful, हाँ. Constant term we can Yes, sir. take outside. Constant term is 1 by 1 2 by is 2 into root a. constant 1 नहीं by होता. 2 root a. root a constant नहीं होता. यहाँ root a के साथ कुछ multiply हो रहा है. अच्छा, okay, sir. Okay, so just take 1 by 2 outside. 1 by 2 integral 0 to infinity. सर रूट ए में I'll वन show you. वन बाई टू भी मल्टीप्लाई हो रहा ना सर. हाँ, root a में 1 by 2 multiply. रूट ए नहीं निकाल सकते सर बाहर. दो जगह है ना सर रूट ए. 1 बाय देखिए रूट ए. ये रूट ए बाहर नहीं निकलेगा. क्यों नहीं निकलेगा? ये रूट ए के साथ में यहाँ पावर है और पावर मल्टीप्लाई करे बाद ही बाहर ओके निकलता हूँ. ओके ओके है ओके ना. सर. तो आप ओके इसको सर. कैसे लॉजिकली सॉल्व करें जरा तो देखिए बच्चे. ये इससे बहुत इंपॉर्टेंट है. 1 by 2 आउटसाइड है. दिस इज जस्ट 1 by 2 आउटसाइड. इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी. राइट, नाउ लुक एट एक्स. यहाँ पे ए का पावर कितना है? रूट ए. एंड अलॉन्ग विद दिस वी हैव पावर 2n टू माइनस. एन माइनस वन. तो अपन रीअरेंज करके जब आप लिखेंगे तो ये कैसा हो जाएगा? देखिए मैं बताता हूँ. इट इज 1 by रूट मीन्स पावर 1 by 2.
तो ये हो Yes, sir. जाता a का पावर 2n-1 पहले से ही था, और ये रूट का मतलब बाई 2। Okay, sir. ओके ना? देन t Okay. के साथ भी यही काम हो रहा है। t का पावर पहले Okay. से 1/2 है, तो ये 2n minus 1 by 1/2। 2. दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी आर रीअरेंजिंग हियर, राइट? t Yes, sir. पावर माइनस टी एज इट इज, एंड ये रूट ए है ना, इसको भी यहाँ पे मिला Yes, देंगे sir. किसके साथ? अभी नहीं Okay, मिलाएंगे, sir. रहने दीजिए, नेक्स्ट स्टेप में मिलाएंगे। a पावर 1/2 एंड और क्या है, t पावर -1/2 इंटू डी। करेक्ट? करेक्ट। Yes, sir. Yes. नाउ वी मर्ज this one with this, again bases are equal, power should be added. This one again with this also, bases Yes, are sir. equal, power should be added. Again the next step is very important. I is equals to, this is 1/2 outside only, integral 0 to infinity must be as 1 by, here already we have a power, इसको split करेंगे, split करें तो 2n/2 means n left, 1 by 2 -1/2, और इसको इसमें ऐड कर दिए तो बेसिस आर इक्वल, पावर शुड बी एडेड, +1/2 इसके साथ ऐड हो जाता, बराबर? Yes, sir. अब t को भी वही काम करना है, splitting that 2 to cancel n left off, and this is -1/2, this is one more -1/2, and e power minus t and dt, correct? Correct now? +1/2 Yes, sir. -1/2 cancel, now a power n is a Cancel. constant, now we can take outside। Okay, sir. पूरा सिंप्लीफाई करके अभी बाहर आप उसको निकाल सकते, 0 to infinity। now look at e power minus t as it is, t to the power of n as it is, minus half how much? -1. 1, that's it. Now what is this value by definition? What is the value of this one by definition of gamma function? It By is definition, value of, it is the value 1 of by gamma 2. n only। Yes, sir. Okay, proof. Gamma n by 2 a power n we have to prove, that we proved। समझ में आया? Yes, sir. इसे देख लीजिए, ये प्रॉब्लम मैं आपको बोल रहा हूँ, ये आपके पास पे, यस, पास पेपर्स के क्वेश्चन हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। मैक्सिमम मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करूँ, फिर भी जितने भी हो सकते हैं मैक्सिमम मैं कर रहा हूँ। तो गो टू द नेक्स्ट पेज फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम। गेट फ्रॉम वाटर। सर एक प्रॉब्लम, अब इसके अंदर लिमिट जो है हर जगह सेम आ रहे ना सर, एक प्रॉब्लम जो बिना सेम आते वैसा एक प्रॉब्लम करेंगे कैसे? ओके राइट, डिफरेंट प्रॉब्लम 0 to 1, ठीक है, ठीक है। राइट ना? एक्स पावर 3 Okay, sir. इंटू अंडर द रूट ऑफ 1 minus x, here this one we have to do it using beta and gamma function definition, ठीक है ना? Yes, sir. आपके लिए दूसरा प्रॉब्लम करो, चलिए, let us assume that I is equal to integral 0 to 1 x to the So, power of 3 into 60. into The root 1 minus x. we write it as 1 minus x whole power 1/2 dx all, ठीक है ना? Yes, sir. अभी अपन Yes, sir. इसको किससे सॉल्व करेंगे, बीटा फंक्शन के डेफिनेशन से या गामा फंक्शन के डेफिनेशन? Beta, beta function. बीटा फंक्शन, इसके लिए आपको यहाँ पर x पावर m-1 वाला फॉर्मेट चाहिए, है ना? Yes, sir. तो Yes, कैसा sir. बनाएंगे बोलिए? 2 minus 0 1. to 1, 2 - 1 3 हो जाता,
एक्सेलेंट पढ़ रहे हैं आप. 4 4 - 1 4 minus 1 is 3 into 1 minus x whole to the power of 1 by 2. 1 by 2 means 3 by 2 minus 1. 3 by 3 2 by 2 minus. minus 1 is 1 by 2. So directly see the definition x power m minus 1 and 1 minus x Yes, whole sir. power n minus 1. So by definition of beta function, what is this value? It is the Beta value of beta of 4 comma 4 comma 3 3 by by 2. 2. Yes. And now again we know that the first page also we have shown the relation between them, gamma m gamma n by gamma m plus n. So 4 comma 3 Yes, sir. by 2 को relation से solve करेंगे. By relation of beta and gamma function, beta, this can be written as gamma 4, this can be written as gamma 3 by 2, this can be written as gamma 4 plus 3 by 2, and this is equals to, what is this 4 plus 3 by 2 becomes? 4 to the 8 plus 11, 8, 11 by 2. Yes, is it 11 by देख 2 लो or सर. not? अरे मैं बोल रहा हूँ आगे भी Yes, sir. देखो. 11/2 सर. इसका मैनुअल कैलकुलेशन तो आपको आना चाहिए. Now next, this is equals to, I is equals to, so what is the gamma 4 value? Can we write 3 factorial? Yes, sir. Yes. And gamma 3 by 2, I told you the logic, 1 by 2 into root pi. 1/2 into root 5. And this is gamma 11 by 2. So I told you the logic to remember to simplify gamma 11 by 2 value of 3 factorial is 6 anyhow into 1 by 2 root pi 6. divided by gamma 11 by 2 can be simplified like this, 9 by 2 9/2 into into 7 by 2 7/2 into 5 by 2 into by 3 2 by into 2 5/2 into three into by 1 two by 2 into 1/2 into root 5. into root pi, and root pi cancel. This Yes, sir. root 2 3 the pi cancel. This 1 by 2, this 1 by 2 cancel. Correct? okay, sir. Finally simplify करके बोला 6 by I is equal this value. No, 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 6 don't say by. decimal. Okay, sir. Decimal में नहीं चाहिए आंसर. 5 by 5/2 into 3/2 into 1/2 को चलो. डेसिमल में नहीं. 5 945/6 रूट पाई सर. रूट पाई कहाँ से लाएंगे आप? नहीं सर, नहीं सर. 94 एक नो सेकंड नो सर. नो नो, इट्स रॉन्ग. रूट पाई कैंसिल करे बाद फिर रूट पाई आ गया. यस सर, एक सेकंड सर. 32/315 आ रहा सर. दिस इज करेक्ट. 32/315 इज करेक्ट. अब ऐसा मत समझो मैं प्रॉब्लम ये ऑलरेडी सॉल्व करे बाद मेरे पास इसका आंसर अवेलेबल है बाद ही आपसे पूछता हूँ मैं. हाँ सर, सही है. हाँ, ये बात याद रखिए अच्छे से. हाँ. तो नाउ वी हैव एक इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन. इवॉल्वेट बोलेंगे सर ये तो बहुत ही सिंपलीफाई आसान हो गया, 1 माइनस सिक्स का डेफिनेशन से कर दिए. थोड़ा सा टिपिकल लेंगे और 0 to 2 ले लेंगे. 0 to 1 भी कॉमन लिमिट ही है ना. यस सर. एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स लिए तो डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं, थोड़ा डिफरेंट ले लेंगे. 2 माइनस एक्स 2 - 6 होल टू द पावर ऑफ 1/2 इंटू डी. 1/2. यस, आई वांट टू मेक दिस 1 और यहाँ पर लिमिट आना चाहिए 0 to 1, देन ओनली इट इज पॉसिबल टू सिंप्लीफाई. पॉसिबल. यस सर. तो उसके लिए क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप इज लेट अस अज्यूम दैट दिस वैल्यू इज इक्वल टू आई ऑलवेज. दिस इज 0 to 2, this is x power is 3, equal to 0 to 2 x two power minus x 3 - 6
दिस इज 1 by होल 2 पावर 1 dx. by 2 इंटू डी। तो अपन एक सब्स्टिट्यूशन लेंगे यहाँ पर, पुट ये वैल्यू एक्स को ले लेंगे 2t, 2 कॉमन निकाल लेते इसके बाद, X is equals to x इज इक्वल टू 2t। इफ यू डिफरेंशिएट, अपर लिमिट का 2 है सर वो नहीं, अपर लिमिट या का 2 माइनस एक्स, नो, खाली ये 2 माइनस एक्स का 2. सब्स्टिट्यूशन ले रहे बस अपन। अच्छा, x is equals to 2t सब्स्टिट्यूट करना है, ओके सर. देन dx इज dx इक्वल टू 2 dt, 2 dt. राइट। लिमिट्स को चेंज करना पड़ता yes sir. ओके है। अपर लिमिट, व्हाट इज अपर लिमिट हियर? 2 मींस इफ यू पुट x की प्लेस पे अगर 2 रखे, 2 इज इक्वल टू 2t, दिस इंप्लाइज व्हाट यू विल गेट, t इज इक्वल टू 1 इज आवर अपर लिमिट, t लोअर is लिमिट, equals to 1. लोअर लिमिट if you put 0, Lower limit 0 0 is is equals to equals to 2t. 2t, this implies whatever t t is will equals become, to 0. exactly 0. t becomes 0। so this question I is equal to, कन्वर्ट होते जा रहा सर है अगर धीरे, गामा फंक्शन में आया तो भी ऐसे ही यही करना है सर मेथड. गामा फंक्शन में आया तो यही मेथड करना, गामा फंक्शन में कई को आ रहा है, बीटा में आ रहा हूँ। नहीं मतलब अब गामा में भी अगर उन्हें लेवल लिमिट चेंज करके दिया तो. हाँ लिमिट तो अपन, अगर 0 टू इन्फिनिटी है, 0 टू इन्फिनिटी होना है, नो नीड टू चेंज, नहीं तो चेंज कर लेना, ओके सर. 0 टू 1 ओके सर. एक्स क्यूब, नाउ एक्स क्यूब वैल्यू 2t होल क्यूब, नाउ 2t क्यूब. यस सर. 2t होल क्यूब यस सर. इंटू 2 इंटू माइनस x value is 2t whole to 2 the power of माइनस 1 टू by 2 की वैल्यू 1 by 2. into dx value is 2t, 2 dt. यस सर. correct? 2 यस power सर. 3 becomes 8, अलग अलग करना है, तो 2 power 3 is 8, t power 3 separately, एक यस काम सर. करेंगे, नेक्स्ट स्टेप करेंगे। 8t पावर 3. ओके, 8, 2 power 3 is 8, ये 2 power 3 8, यहाँ का 2 मतलब 16 आउटसाइड आ सकता है, राइट, 16 आउटसाइड, यस सर. 0 to 1, t power 3 is there, now here in these two also we can take 2 common, पर जो भी 2 आप कॉमन ले रहे हो उसके साथ पावर 1 by 2 भी रहता, 2 power 1 by 2 ओके. is there, we are taking common, यहाँ पे क्या बचता, 2 पावर 1 by 1 2. minus 1 t माइनस t. whole 1 to the by 2 power of 1 पावर by 1 by 2 2 into dt. dt is left, ये 2 power 1 by 2 का मतलब है रूट 2 को बाहर निकाल देंगे, 16 रूट 2 आउटसाइड, 16 root 2 दिस इज 0 to 1, integral 0 to 1 t ओके, power cube. t power 3 can be written as 4 minus 1, yes, 1 Yes sir. minus t power 1 by 2 can be written as 3 by 2 minus 1, Yes sir. yes, दिस इज इक्वल टू, पिछले क्वेश्चन से क्या फर्क आ रहा, एक्स्ट्रा 16 रूट 2 साथ में आ रहा, इसकी Yes sir. वैल्यू बाय डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन, this is 4 comma 3 by 2 again, right, 16 root 2 as it is, Yes sir. so this Beta is by 4 comma definition 3 gamma 4 gamma 3 by 2 by gamma 4 plus 3 by 2, है ना, 4 plus 3 by 2. Yes sir. इसको अपन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, 16 रूट 2 एज इट इज, इसकी वैल्यू अभी आपको आई थी 32 बाई 32 by 315. 315, तो एक काम करना, ये 32 को 16 से मल्टीप्लाई करके रूट 2 एज इट इज रख देना वहां पर, तक कितना हो रहा बोलो, 16 इंटू 32, 16 into 32. 512. 512 रूट 2 इज द आंसर, 512 रूट 2 बाई 315 इज द आंसर ऑफ दिस 315. क्वेश्चन, ठीक है ना। Okay. तो Okay sir. मैक्सिमम मैं कोशिश करा के कुछ कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करने की, अभी जितने हो सकते उतने कर दिए, अभी देखेंगे अगर और कुछ क्लास में कुछ बीटा और गामा फंक्शन के क्वेश्चन और कुछ करा सकते हैं तो एक और क्लास रखेंगे, देन दिस विल बी कंप्लीटेड, कोशिश करता हूँ मैं एक और क्लास रखने की, बीटा गामा फंक्शन डेफिनेशन इज कंप्लीटेड, प्रॉब्लम्स वी Yes sir. हैव डन, ओके, प्रूफ्स वी हैव डन, प्रॉपर्टीज वी हैव डन, रिलेशन वी हैव डन, और मैं आपके क्वेश्चन पेपर के
पास्ट पेपर के मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करा। ठीक है। ठीक है। और ठीक भी है कुछ सर। क्वेश्चन इसमें रह जाते हैं, ऐसे तो अपन 100% तो फिर भी नहीं कर सकते इतना भी कोशिश करने के बाद में। फिर भी और कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं, वो देखेंगे अपन फिर आपको। अगर आप ऑफलाइन में कभी प्रैक्टिस आए करें करेंगे। तो फिर वो प्रैक्टिस जी करवा सर। दें। ठीक है ना। ऑन एंड ऑफ दिस ठीक है। मीटिंग सेंड इट ठीक है। दिस रिकॉर्डिंग एंड पीडीएफ। थैंक यू सर।